In 2 days since Congress's spectacular defeat in the Hindi heartland, the party faces big questions of credibility, political future and what happens in the 2024 battle just months away. But it's not just questions from within the party. It looks like the India bloc is now not taking any more snubbing from the Congress, which, remember, during the assembly election had pretty much told their alliance partners to stay away. Fault lines have become even more apparent after allies, one after the other, have started calling out the Congress on their defeat in a clear indication that first they have faced a rout and now the Congress is losing its clout within the opposition bloc. But to piece together the alliance amid the rumblings, the Congress party had called for a meeting tomorrow, that is the 6th of December. That meeting apparently was to formulate the strategy for the 24 Lok Sabha elections. But it seems that after the December 3 results, not too many people are keen on joining the meeting. Top leaders of the opposition parties decided to drop out one by one. The first was Akhilesh Yadav, then Mamata Banerjee, who said that she doesn't even have the message about attending the meeting, followed by others like Hemant Soren and other top leaders. मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। कल सर I.N.D.A गठबंधन की सब बैठक है, तो सर आप जा रहे हैं? हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि जाए। The Congress was quick to attempt some damage control, saying that what was scheduled for tomorrow is just an informal meeting of the India bloc. A formal one will be held in the second week of December at the convenience of everyone. However, the cat was already out of the bag. Shiv Sena UBT's Sanjay Raut, in fact, revealed today morning itself that this was no hurriedly called last-minute meeting. In fact, it was planned well in advance, where the Congress president had spoken to Uddhav Thackeray. देखिए, आनंद फानंद में यह बैठक नहीं बुलाई गई है इंडिया गठबंधन की। आनंद फानंद की बात नहीं है। चुनाव नतीजे आने से पहले ही इस बैठक का आयोजन किया था और उससे पहले ही सभी को सूचित किया गया था। मुझे मालूम है कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही 2 दिन पहले खड़गे साहब ने उद्धव जी से बातचीत की। पार्टी के और बड़े नेताओं ने भी हमसे संपर्क किया था कि हम इस प्रकार की बैठक करने जा रहे हैं और उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, अगर सब लोग दिल्ली में मिलते हैं तो मैं ज़रूर आ जाऊंगा और उद्धव जी कल यहाँ दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। Remember, the meeting anyway was likely to see empty chairs after murmurs against the Congress turned into open statements questioning the Congress in the last 24 hours, while Akhilesh Yadav said that the Congress had undermined its allies and now after a loss, perhaps their ghamand would be reduced a little. Omar Abdullah today again reiterated that what happened on the 3rd of December should not be construed as a defeat of I.N.D.I.A, but in fact is a defeat only and only of the Congress. म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हो नहीं रहे हैं, असेंबली का ये कहां से दावा कर रहे हैं। रही बात नंबरों की, अपने तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 3 सीटों पर रिजर्वेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। इससे पहले भी नॉमिनेशन से सीट भरी गई हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट करने का काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को नॉमिनेशन का इख्तियार देना ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी वाले जानते हैं उनको नंबर मिलेंगे नहीं, तो नॉमिनेशन के जरिए वो थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। परिणाम नहीं, अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। ये हमको नहीं बुलाएगा, इंडिया अलायंस की मीटिंग में आपको नहीं बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। देखिए, उन्होंने जो मनमानी करनी थी 3 स्टेट में कर लिया और उसका नतीजा भी देख लिया। नीतीश जी को भी जाने नहीं दिया, अखिलेश जी को भी जाने नहीं दिया, शरद पवार को जाने नहीं दिया, दीदी को जाने नहीं दिया।
अकेले कांग्रेस अपने बलबूते पे लड़ी और ये प्रूफ करना चाहा कि इंडिया में हम ही एक नंबर पार्टी है और हम ही राज कर सकते हैं। तो नतीजा तो सामने है। इसलिए अब ये 6 तारीख का जो मीटिंग था उसमें कितने लोग आएंगे। Shazia Almi, national spokesperson of the BJP, joins us along with Pradeep Bhati, spokesperson Samajwadi Party, Dr. Chandan Yadav, state secretary of the JDU. My first question is to you, Lokesh Jindal. Very convenient. Tomorrow was supposed to be the coordination meeting. Now that 5 people have dropped out, now you're like, "Ye to meeting hi nahi thi." Good evening, Padmaja. First of all, I hope that cyclone Mishwang, it doesn't cause more havoc. It has already killed 5 people in Chennai. And I think it was a wise thing to do, to postpone the meeting. Because when there is such a big danger on the coastal seashore, when such a huge tragedy is mounting on the nation, I mean, that's what Congress is all about, not thinking only about politics. Sir, I do not think you postponed it because of the cyclone. It was well on track till the time people started backing up. And anyway, the meeting is happening in Delhi. The meeting was not happening in Chennai. Mr. Stalin has openly stated that because of the cyclone, he was not able to travel. The airports are shut in Chennai. And secondly, when you're talking about... Fine, Mr. Stalin is not coming because of cyclone. Why is Mr. Soren not coming? What cyclone is stopping him? Well, when such a form of a issue is there, I mean, the entire panel, it has decided to postpone the meeting to 17th of December. Mr. Lalu Prasad Yadav has openly stated the meeting is going to be held on 17th of December. I don't know what's this haste about. I will tell you, because here is what, you know, it's very valiant on your part, but Shazia Almi, this is the larger concern for a cyclone. Not the cyclone that has hit I.N.D.I.A, the cyclone that is hitting Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Shazia Almi. So, well, it is very, as you said, it's very valorous of him to actually defend this, what's happening. But we all know that the point of attraction is becoming the point of rejection and repulsion for the party. And it is only too obvious, as they themselves claim that they had decided on this a long time back. But you're clearly hearing people saying that, you know, there's Mamata Banerjee, we heard what Akhilesh Yadav had to say, we heard what Nitish is saying, we heard what Sharad Pawar had to say earlier. So it's pretty obvious that nothing much is happening there. And now, instead of resorting to any damage control or face saving or true concession of their defeat, they're making it all about everything else but their own responsibility. You just see the kind of statements that have been made. Either is the EVM or the Election Commission or just the foolish people in the Hindi heartland, you know, and abusing them. Or is the ED raids, or it's, you know, the Election Commission, and of course the lies of Modi ji. It's everything but the lack of responsibility, the lack of pull. So I think it's quite sad, you know, that the assembly now is trying very hard. In the assembly elections of 4 states, Congress has got 10 lakh more votes than BJP. The core voter of Congress is still intact. Good. Look at Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan. Then be happy. You've had a moral victory. You've got moral MLAs and moral MPs. You've made a moral government with a moral victory. Are you happy? It is the voter that is supreme. No, not an MLA, not an MP. It is the voter. Till the time the voter of the Congress stands with the Congress, the party is rock solid and rock hard. You cannot, listen, please don't interject. See, you cannot question the credibility simply on the basis of an electoral turnout. In 2003... Sir, then in that case, the Madhya Pradesh government of 2018 originally was that of the BJP because they had 1% greater vote share than you in Madhya Pradesh. Exactly. But they didn't. 1% more. The government was of the Congress. Yes. You had greater seats. What kind of a logic is this? Like, this actually is an insult to the intelligence of the people where you say the larger victory is ours because we got greater vote share. No, it's not just that. Let them form the government. But politics is not just about forming the government. Cumulative votes in 4 states. No, madam, politics is not all about forming the government. Okay, so there are various methods with which the party which does not actually enjoy the mandate of the masses forms the government. Now, if you talk about the overall percentage, I would say that more than 50% of the people didn't want BJP to come to power, but still it came to power. It's the way first past the post system works. Lovely. Okay, Shazia, let me quickly respond, then I want to bring in the others. Yes. Exactly. So
So this is a parliamentary democracy. You talk about the federal structure. These are Vidhan Sabha Chunav. And the fact of the matter is that 4 states that we're talking about, you can't pick up all the votes cumulatively and give a figure and take out an average. It is first past the post, as you said. That is how elections are done in this country. That is what the Constitution says is basic civics. Okay, So let me just ask to put Dr. a spin, Chandan Yadav. your Dr. spin Chandan master Yadav, won't help you. is it because the health of the alliance is faltering that Nitish ji's health also suddenly got bad and he decided he wasn't coming for the meeting tomorrow? सेहत किसकी खराब है, गठबंधन की या नीतीश जी की? गठबंधन की खराब है, नीतीश जी की खराब है। सभी जगह सही चल रहा है और फर्स्ट डे से हमारे नेता ने कहा है कि हम लोग सब इंटैक्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े हो रहे हैं और इनका ही प्रयास है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही ये प्रयास है कि आज I.N.D.A गठबंधन भी एक फॉर्म ले चुका है। और देख लीजिए कि आप, हमारे नेता ने पहले ही कहा कि हम सभी मिलजुल करके चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को या फिर देश में जो लोकतंत्र खतरे में है उसको हम लोग स्थापित कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी है, लोकतंत्र खतरे में है तो उसको बचाने के लिए कल की मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? मिलजुल कर मीटिंग से तो सबने किनारा कर लिया। चंदन जी, मीटिंग से सब लोग किनारा क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो कौन किनारा कर रहे हैं, किनका व्यक्तिगत कारण क्या रहा है वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उनको बड़ा दिल रखना होगा, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक अलग सहानुभूति के साथ कार्य करना होगा, तभी हम लोग देश लेवल पर इंटरेक्ट हो करके, और जो आज लोकतंत्र पर जिस प्रकार से एकदम प्रचार तंत्र हावी हो चुका है उसको हम लोग जवाब दे सकते हैं। बड़े दिल की बात हो रही है। लेट मी प्ले आउट व्हाट जेडीयू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेड लोकेश जिंदल। उनका दिल इतना बड़ा है कि उनको लग रहा है कि अब मोदी है तो मुमकिन है। हो सकता है मोदी की वजह से आपकी कल की मीटिंग मुमकिन हो जाती, जो अभी साइक्लोन की वजह से बीच मझधार में फंसी हुई है। लेट्स लिसन इन टू व्हाट द जेडीयू एमपी सेड, लोकेश जिंदल। 4 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी ने जो नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट यही बतला रहे हैं। जनता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात पर मोहर लगाई कि मोदी है तो मुमकिन है और बीजेपी को 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। ये लोकेश जिंदल, मोदी है तो मुमकिन है, ये कह रहे हैं जेडीयू के सांसद। नहीं, इसका मतलब इन तेलंगाना द पीपल डिड नॉट बिलीव इन मोदीज गारंटी। So you cannot say that one single narrative leads to formation or dissolution of governments. It is just the scenario was set, and after the verdict was out, the victory was delivered. Then you have the credit being handed over to, to as per the political convenience that a party But JDU wants. कह रही है कि थोड़ा दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, मुट्ठी खुली होनी चाहिए। जी देखिए, दिल बड़ा है, कांग्रेस से बड़ा दिल किसका होगा? कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सभी विचारधाराओं को जगह दिया, स्थान दिया। कांग्रेस वो पॉलिटिकल पार्टी है which has introduced democracy, preserved nationalism. Right. It has. बताइए प्रदीप भाटी जी, कांग्रेस ने इतना बड़ा दिल दिखाया है, बाकी सब दलों को भी यही करना चाहिए। कल की मीटिंग बॉयकॉट करके किसको फायदा होगा? मिस्टर भाटी। Thank you, Padmaja. This is your interpretation. There is a difference between boycotting a meeting and then you are pre-engaged in some other already scheduled meetings. So that is the reason why Mr. Akhilesh Yadav is not available. I don't see any other reason. Whatever reason you want to play, that's a different thing. Sir, but I don't know. I mean, correct me. We are still but not. Here is what Akhilesh ji said yesterday in Varanasi. अब जबकि चुनाव के नतीजे आ गए हैं, तो उम्मीद है कि घमंड भी थोड़ा कम होगा। मतलब doesn't really sound to me as if he's like मैं तो बिल्कुल दौड़ के आ रहा हूँ मीटिंग के लिए, बट पहले कोई और अपॉइंटमेंट हो गया। नहीं, मैं
you didn't ask about the meeting at that point of time. Your question was different, so answer will get that answer. The question was not about the meeting, whether you are attending the meeting. The question was about the result, the results. Okay, so fair enough. Everyone has their own reasons right now. The more important thing is that for the alliance to sustain, first, before an actual meeting of people, perhaps there needs to be a meeting of minds. Only then will a common objective actually be met. Let's see how this pans out. Right now, there is a serious storm in the alliance. Thanks very much, all gentlemen. Shazi Almi for joining me.